Very good morning, students. I hope you all are great and doing good in your studies. Today we are going to do our chapter 3, which is working in Windows. So without wasting any further time, let's learn how we work on our Windows in our computer system. So the name of our chapter is working in Windows, and the topics which we will study here are features of Windows 10, components of a window, starting Window Explorer, libraries, viewing files and folders, working with the control panel, installation of a program, and troubleshooting. Now, introduction. Windows in an operating system क्या है जो एक्ट करता है एज एन इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड द हार्डवेयर. नाउ ये ऑल्सो मैनेज करता है रिसोर्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम एंड प्रोवाइड करता है कॉमन सर्विस फॉर अदर सॉफ्टवेयर. ये ट्रैक रखता है ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग क्रिएशन, डिलीशन एंड कॉपी एंड स्टोरेज ऑफ फाइल्स. Now, the first GUI, यानी कि Graphics User Interface Edition of Windows, featuring a new user interface, was introduced in 1995 and was called Windows 95. Increased usage जो है of technology का and continuous research का led to the development of advanced editions of Windows, that is Windows 98, Windows 2000, Windows ME, Windows NT, Windows 2003, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, 8 and Windows 10. Now, the operating system has simplified the task of managing data in a computer. ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से हम अपने डेटा को इजीली मैनेज कर पाते हैं इन आवर कंप्यूटर सिस्टम. नाउ विंडोज एक्सप्लोरर एक मेन टूल है जिसको हम यूज करते हैं टू इंटरैक्ट विद विंडोज 10. यू नीड टू यूज विंडोज एक्सप्लोरर टू व्यू, एक्सप्लोर या फिर ऑर्गेनाइज लाइब्रेरीज, फाइल्स एंड फोल्डर्स. व्हाट आर द डिफरेंट फीचर्स ऑफ विंडोज 10? So Windows 10 has become very popular because of its user-friendly environment, and the salient feature of Windows 10 are as follows. It is easy to use and learn, faster, more reliable and secure. बेटर मेमोरी मैनेजमेंट मिलता है हमें यहाँ पे. आप रीडेकोरेट कर सकते हो अपने डेस्कटॉप को विद न्यू थीम्स, स्लाइड शोज एंड हैंडी गैजेट्स. आप पिन कर सकते हो अपना फेवरेट प्रोग्राम एनीवेयर ऑन द टास्क बार फॉर इजी एक्सेस. आप जब कर सकते हो लिस्ट इन विंडोज 10 takes you right to the document, picture या फिर songs या फिर websites that you are quite often simply by right clicking a program button on the taskbar, and एक list of files आएगी programs की that will pop up which you have recently opened. आप jump कर सकते हो into any file by clicking it on the list. In Windows 10, the thumbnail view of open programs are available on the taskbar, and move the mouse pointer over the thumbnail. आपको thumbnail के ऊपर pointer को move कराना है to preview it in full screen. Click it to open the program window. Components of a window. So let us study the components of Windows 10. पहले आता है हमारे पास टाइटल बार. तो जो टाइटल बार है ये डिस्प्ले करता है नेम ऑफ द करंट ओपन फाइल. टूल बार, ये बार कंटेन करता है वेरियस मेन्यूज एंड आइकन्स टू वर्क इन विंडोज. So this is our toolbar. Then we have our address bar. Address bar show करता है हमें लोकेशन या फिर एड्रेस ऑफ द करंट विंडो. Then we have forward backward buttons. ये जो buttons हैं ये हमें ले जाते हैं to the next या फिर previous viewed folder पे. We have search box. ये जो box है इसको हम use करते हैं to search for a particular file. Navigation pane की मदद से हम find कर सकते हैं अपने files and folders. And you can also move या फिर copy your items directly to the destination in the navigation pane. Details pane जो होता है इसको हम use करते हैं in Windows 10 to see most common properties जो associated हैं with the selected file. मिनिमाइज बटन की हेल्प से हम अपने विंडो को श्रिंक कर सकते हैं ऑन द टास्क बार. रिस्टोर बटन की हेल्प से हम रीसाइज कर सकते हैं अपने विंडो को बैक टू द ओरिजिनल साइज. क्लोज बटन की हेल्प से हम अपने विंडो को क्लोज कर सकते हैं बाय क्लिकिंग ऑन दिस बटन. एंड स्टार्टिंग विंडोज एक्सप्लोरर. तो फॉलो द गिवन स्टेप्स टू स्टार्ट विंडोज एक्सप्लोरर. हम प्रेस करेंगे विंडोज प्लस आर की को टू ओपन द रन विंडो. देन इन द ओपन बॉक्स हम एक्सप्लोरर टाइप करेंगे एंड देन क्लिक ऑन ओके. तो फाइल एक्सप्लोरर विंडो विल ओपन. नाउ विंडो एक्सप्लोरर को डिवाइड किया गया इनटू टू पेन्स, एंड जो लेफ्ट पेन है वो डिस्प्ले करता है हमें डिस्क, ड्राइव्स एंड फोल्डर्स इन अ हायरार्किकल ऑर्डर, जबकि जो राइट पेन है वो डिस्प्ले करता है हमें कंटेंट जैसे ड्राइव या फिर फोल्डर्स दैट इज सिलेक्टेड इन द लेफ्ट पेन. नाउ ये वाला जो साइन है ये इंडिकेट करता है दैट फोल्डर कंटेन्स अ सब फोल्डर. बाय क्लिकिंग ऑन दिस साइन हम अपने सब फोल्डर को व्यू कर सकते हैं इनसाइड द पर्टिकुलर फोल्डर, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एक्सपेंडिंग. फिर आता है हमारे पास लाइब्रेरीज. ये काइंड ऑफ फोल्डर होता है विंडोज 10 में जो अलाउ करता है हमें टू ऑर्गेनाइज आवर फाइल्स इन वन प्लेस ताकि हम इजीली उनको सर्च या फिर एक्सेस कर सकें. लाइब्रेरी गैदर करता है हमारे फाइल्स को स्टोर्ड इन डिफरेंट लोकेशंस बट हाइड करता है उनकी एक्चुअल लोकेशन.
ये डिस्प्ले करता है उनको एज अ सिंगल कलेक्शन। विंडोज 10 प्रोवाइड करता है हमें 4 डिफॉल्ट लाइब्रेरीज फॉर डॉक्यूमेंट्स, पिक्चर्स, म्यूजिक एंड वीडियोज। आप ऑल्सो क्रिएट और कस्टमाइज कर सकते हो अपनी खुद की लाइब्रेरी। फॉलो द गिवन स्टेप्स टू क्रिएट योर ओन लाइब्रेरी। स्टेप 1 में हम सिलेक्ट करेंगे एक न्यू लाइब्रेरी ऑप्शन इन द टूल बार। देन द न्यू लाइब्रेरी फोल्डर appears on the screen, या फिर हम राइट क्लिक कर देंगे on the library button in the navigation pane. Then in step 2 we will select new option in shortcut menu and हम click कर देंगे on the library option in cascading menu. Follow the given steps to customize a library. अगर हमें अपनी library को customize करना है, what we will do, हम right click करेंगे on libraries button in the navigation pane, एक new हमारे पास on new and then हम क्लिक करेंगे ऑन लाइब्रेरी ऑप्शन। फिर हम डबल क्लिक करेंगे न्यू लाइब्रेरी बटन पे एंड क्लिक द इंक्लूड अ फोल्डर टैब। इंक्लूड अ फोल्डर इन न्यू लाइब्रेरी डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा। देन टू ऐड फोल्डर इन न्यू लाइब्रेरी आप सेलेक्ट करोगे फोल्डर को ईदर फ्रॉम द नेविगेशन पेन या फिर फ्रॉम एनी ड्राइव। देन क्लिक ऑन द इंक्लूड फोल्डर बटन। इन द न्यू लाइब्रेरी प्रॉपर्टी डायलॉग बॉक्स आप नोटिस करोगे कि जो सिलेक्टेड फोल्डर है इन द लाइब्रेरी लोकेशन पेन। Then right click करोगे आप on new library folder and select the properties option. Viewing files and folders, तो Windows 10 हमें बहुत सारे ways प्रोवाइड करता है जिससे हम अरेंज और आइडेंटिफाई कर सकते हैं अपने फाइल्स को एंड उनको व्यू कर सकते हैं। Now the information can be viewed in different modes by clicking on the drop down arrow of more option जो located है on the right hand side of the toolbar. Let us discuss extra large icons. ये जो option है ये डिस्प्ले करता है extra large icons of the files and folders. Now changing to this view useful होता है if working with images and video files, यानी कि जब हम images या video files के साथ वर्क कर रहे हैं उस टाइम पे ये फीचर हमारे लिए यूजफुल होता है। Large icons, तो ये ऑप्शन डिस्प्ले करता है files and folders as large icons and medium icons ये डिस्प्ले करता है हमारे files और folders को as medium icons और ये हमें एक बेटर आइडिया ऑफ फाइल और फोल्डर कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। स्मॉल आइकन्स डिस्प्ले करते हैं फाइल्स एंड फोल्डर्स एज स्मॉल आइकन्स विदाउट अ प्रीव्यू ऑफ इट्स कंटेंट एंड जो फाइल और फोल्डर नेम है वो डिस्प्ले होता है नेक्स्ट टू दी आइकन। नाउ वी हैव लिस्ट, जो द लिस्ट व्यू डिस्प्ले करता है हमें कंटेंट एज अ लिस्ट ऑफ फाइल्स या फिर फोल्डर्स नेम्स प्रीसीडेड बाय स्मॉल आइकन्स। नाउ ये जो व्यू है ये यूजफुल होता है इफ योर फोल्डर या फिर ड्राइव कंटेन्स टू मेनी फाइल्स एंड आप स्कैन करना चाहते हो अपने लिस्ट को फॉर अ पर्टिकुलर फाइल नेम। डिटेल्स ये है एज अ नेम सजेस्ट, यहाँ पे डिटेल्स व्यू प्रोवाइड होता है डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट द फाइल्स एंड फोल्डर्स इंक्लूडिंग नेम, टाइप, टोटल साइज एंड फ्री स्पेस। टाइल्स जो होती है ये जो व्यू है ये डिस्प्ले करता है टाइल्स, फाइल्स एंड फोल्डर्स एज मीडियम साइज आइकन्स अलोंग विद द बेसिक इंफॉर्मेशन जैसे टाइप एंड साइज। देन वी हैव कंटेंट और ये डिस्प्ले करता है हर फाइल और फोल्डर on separate row with details like size etc. Working with the control panel, तो कंट्रोल पैनल एक सिस्टम है फोल्डर यूजिंग विच हम चेंजेस क्रिएट कर सकते हैं अपीयरेंस में एंड करंट सेटिंग्स में ऑफ द विंडोज। नाउ इन सिंपल वर्ड्स ये कमांड सेंटर होता है ऑफ आवर कंप्यूटर। आप इजीली कंट्रोल कर सकते हो डिफरेंट डिवाइसेस को जो आपके कंप्यूटर सिस्टम से अटैच्ड है। आप ऑल्सो इनको यूज कर सकते हो टू चेंज द डिस्प्ले सेटिंग्स, add or remove program and change the date and time etc. ये जो सेटिंग्स हैं ये कंट्रोल करते हैं नियरली एवरीथिंग रिगार्डिंग विंडोज एक्सपीरियंस, इंटरनल सेटिंग्स, पर्सनलाइजेशन एंड दे अलाउ यू टू सेट अप विंडोज द वे यू वांट। हाउ टू ओपन कंट्रोल पैनल, कंट्रोल पैनल कैसे ओपन करते हैं? बाय नाउ इट इज क्लियर दैट आप इजीली चेंज कर सकते हो सेटिंग्स ऑफ द कंप्यूटर यूजिंग कंट्रोल पैनल। तो यू कैन ओपन कंट्रोल पैनल इन टू वेज। पहला आप क्लिक करोगे बॉटम लेफ्ट में स्टार्ट बटन पे to open the start menu, वहां से आप टाइप करोगे कंट्रोल पैनल इन द सर्च बॉक्स एंड सेलेक्ट कर लोगे कंट्रोल पैनल इन द रिजल्ट्स। या फिर आप क्या कर सकते हो, आप एक्सेस कर सकते हो कंट्रोल पैनल को फ्रॉम क्विक एक्सेस मेन्यू। तो आपको प्रेस करना है या फिर राइट टैप करना है पावर लेफ्ट कॉर्नर पे टू ओपन द क्विक एक्सेस मेन्यू। देन आप चूज कर लोगे वहां से कंट्रोल पैनल ऑप्शन। देन वी हैव सेटिंग अप डेट एंड टाइम, तो कंप्यूटर के पास इनबिल्ट कैलेंडर एंड क्लॉक होता है, ये वर्क करता है इवन व्हेन जब हमारा कंप्यूटर ऑफ होता है। तो टू चेंज द कंप्यूटर्स डेट एंड टाइम हम क्लिक करेंगे ऑन क्लॉक, लैंग्वेज एंड रीजन ऑप्शन पे इन द कंट्रोल पैनल। देन डेट एंड टाइम डायलॉग बॉक्स आएगा अलॉन्ग विद अनदर ऑप्शन एंड वहां से हम क्लिक करेंगे सेट द टाइम एंड डेट ऑप्शन पे अंडर डेट एंड टाइम। तो डेट एंड टाइम डायलॉग बॉक्स हमारे पास आ जाएगा। नाउ हम क्लिक करेंगे चेंज डेट एंड टाइम बटन पे, तो डेट एंड टाइम सेटिंग डायलॉग बॉक्स विल appear.
तो हाउ टू चेंज डेट, हमें सेलेक्ट करना है अपना करंट डे इन द डिस्प्लेड कैलेंडर, देन आप चेंज कर सकते हो मंथ यूजिंग द फॉरवर्ड बैकवर्ड एरो बटन्स प्रेजेंट ऑन द कैलेंडर. हाउ टू चेंज टाइम, सो टू चेंज द आवर आप सिलेक्ट करोगे आवर इन द टेक्स्ट बॉक्स, क्लिक ऑन द स्पिन एरोज ताकि आप इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो अपने आवर्स को अकॉर्डिंगली, देन क्लिक ओके. सिमिलरली आप चेंज कर सकते हो मिनट्स एंड सेटिंग्स ऑल्सो. You can also click the clock on the taskbar and then आप click कर सकते हो change date and time settings to open the date and time dialog box. Now about fonts. तो different styles of writing है, characters and text in specific size जिसे हम बोलते हैं fonts. तो some of the popular fonts are Arial, Arial Black, Verdana, Times New Roman, etc. फॉन्ट सेटिंग्स का हम यूज करते हैं जब भी हमें अपने डिस्प्ले टेक्स्ट को चेंज करना है ऑन द स्क्रीन एंड प्रिंटेड टेक्स्ट को. नाउ यू कैन ऑल्सो यूज फॉन्ट सेटिंग्स इन कंट्रोल पैनल ताकि आप डिफरेंट फॉन्ट्स व्यू कर सको एंड ऐड न्यू फॉन्ट्स या फिर डिलीट एग्जिस्टिंग फॉन्ट्स. तो लेट्स सी, सबसे पहले आप क्लिक करोगे अपीयरेंस एंड पर्सनलाइजेशन ऑप्शन पे इन द कंट्रोल पैनल, देन यू विल बी क्लिकिंग ऑन शो एंड हाइड फॉन्ट ऑप्शन. नाउ अगर आपको कोई न्यू फॉन्ट ऐड करना है तो आप क्या करोगे, सिलेक्ट करोगे ड्राइव एंड देन ओपन करोगे फोल्डर जो कंटेन करता है न्यू फॉन्ट्स. वहां से आप सिलेक्ट करोगे एक फॉन्ट दैट यू वांट टू ऐड एंड उसको ड्रैग करके ले जाओगे टू द फॉन्ट फोल्डर इन कंट्रोल पैनल. फॉन्ट विल बी एडेड इन द लिस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग फॉन्ट्स. नेक्स्ट वी हैव हाउ टू डिलीट एंड एग्जिस्टिंग फॉन्ट. तो आपको फॉन्ट को सिलेक्ट करना है, देन आप क्लिक करोगे डिलीट बटन पे प्रेजेंट अबव द थंबनेल. हाउ टू चेंज द माउस सेटिंग्स, माउस सेटिंग्स को हम कस्टमाइज कर सकते हैं इन वेरियस वेज. जैसे हम चेंज कर सकते हैं अपीयरेंस ऑफ द माउस पॉइंटर, changing the function of your mouse buttons या फिर altering the scroll speed of the mouse wheel. So to click उसके लिए आप क्लिक करोगे कैटेगरी ड्रॉप डाउन एरो पे एंड देन क्लिक ऑन लार्ज आइकन्स. वहां से आप सिलेक्ट करोगे अपना माउस ऑप्शन टू एडजस्ट योर कंप्यूटर्स सेटिंग्स. नाउ द माउस प्रॉपर्टी डायलॉग बॉक्स विल अपीयर. फिर आप क्लिक करोगे बटन टैब पे जो प्रोवाइड करेगा आपको ऑप्शंस टू चेंज द सेटिंग्स ऑफ माउस बटन्स टू ईदर राइट हैंडेड या फिर लेफ्ट हैंडेड. अंडर बटन कॉन्फ़िगरेशन सेक्शन आप सिलेक्ट करोगे चेक बॉक्स टू मेक चेंजेस इन द बटन्स ऑफ द राइट एंड द वन यू यूज फॉर प्राइमरी फंक्शन जैसे सिलेक्टिंग एंड ड्रैगिंग. नाउ टू चेंज द डबल क्लिक स्पीड ऑफ योर माउस, आप ड्रैग करोगे अपने स्लाइडर को टूवर्ड्स द लेफ्ट एंड उसको स्लो करोगे एंड टूवर्ड्स द राइट टू मेक इट फास्ट. टेस्ट करना है आपको अपनी स्पीड. डबल क्लिक द फोल्डर गिवन टू द राइट साइड and if the folder does not open, अगर आपका फोल्डर ओपन नहीं होता या क्लोज, then try using the slower settings. How to double click the mouse, तो विंडोज के पास एक स्पेशल फीचर होता है जो रिप्लेस कर सकता है हमारे डबल क्लिक सेटिंग को ऑफ अ माउस विद सिंगल क्लिक. तो फॉलो दी सिंपल स्टेप्स एंड फॉरवर्ड द प्रैक्टिस ऑफ डबल क्लिकिंग द माउस फॉरएवर. आपको क्लिक करना है फोल्डर ऑप्शंस पे इन कंट्रोल पैनल, देन एक्टिवेट करना है डबल क्लिक को टू ओपन एन आइटम ऑप्शन अंडर क्लिक आइटम्स एज फॉलो सेक्शन. फिर आप क्लिक करोगे ऑन अप्लाई एंड देन क्लिक ऑन ओके. नाउ enjoy the experience of working with double click now and remember to select any item from the list. You just have to place the mouse pointer there. किसी भी आइटम को सिलेक्ट करने के लिए आप अपने माउस पॉइंटर को वहां पे लेके जाओगे एंड द आइटम वुड बी हाईलाइटेड, वो हाईलाइट हो जाएगा एंड टू ओपन इट आपको बस उसको एक बार क्लिक करना होगा. कंप्यूटर इन स्लीप मोड, तो स्लीप एक पावर सेविंग स्टेट होता है जहां पे हमारा कंप्यूटर टर्न ऑफ नहीं होता कंप्लीटली, ये प्रोसेस में रहता है. मॉनिटर एंड हार्ड डिस्क जो है वो बंद हो जाता है, बट द कंप्यूटर पुट्स आवर वर्क एंड सेटिंग्स इन रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड ड्रॉ कर लेता है एक स्मॉल अमाउंट ऑफ पावर. ये अलाउ करता है हमारे कंप्यूटर को टू क्विकली रिज्यूम फुल पावर ऑपरेशन व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग अगेन. नाउ फॉलो द गिवन स्टेप्स टू पुट योर कंप्यूटर इन स्लीप मोड. तो इसके लिए आप पावर ऑप्शंस कैटेगरी पे जाओगे इन द कंट्रोल पैनल, सेलेक्ट करोगे पावर सेवर रेडियो बटन को एंड द स्लीप मोड विल बिकम एक्टिव. नाउ टू मेक फर्दर चेंजेस आप क्लिक कर सकते हो चेंज प्लान सेटिंग्स ऑप्शन पे एंड सेलेक्ट कर सकते हो रिक्वायर्ड सेटिंग्स एज पर योर नीड. इंस्टॉलेशन ऑफ अ प्रोग्राम, तो जब भी आप देखते हो अपने कंप्यूटर को नॉट हैविंग एनी प्रोग्राम दैट यू वांट, तो आप उसको इंस्टॉल कर सकते हो. तो प्रोग्राम्स यूजुअली अवेलेबल होते हैं ऑन सीडीज या फिर डीवीडीज एंड टू इंस्टॉल अ न्यू प्रोग्राम आप क्या करोगे, आप क्लिक करोगे कंट्रोल पैनल पे एंड देन यू विल बी क्लिकिंग ऑन प्रोग्राम्स ऑप्शन. नाउ अंडर प्रोग्राम्स एंड फीचर ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है हाउ टू इंस्टॉल अ प्रोग्राम. चूज अमंग द 3 alternatives given as per your choice. नाउ आप ओपन करोगे एक चेक बॉक्स displayed in the location and name the installation program that Windows will run to install the program. Finally आप क्लिक करोगे finish पे to install the program. Every program आपसे पूछेगा कुछ different set of questions
एंड आपको इंस्ट्रक्शंस देगा विच यू हैव टू फॉलो. नाउ व्हाट इज ट्रबल शूटिंग? तो माउस इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली. जैसे आपका माउस अगर प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा, एज्यूम दैट आप कुछ इंपॉर्टेंट वर्क कर रहे हो अपने कंप्यूटर पे एंड सडनली आपका माउस जो है वो वर्क करना स्टॉप कर दे. नाउ डू नॉट पैनिक. विंडोज 10 के पास एक फीचर है जो आपको इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने में हेल्प करेगा. नाउ फॉलो द गिवन स्टेप्स टू मेक योर कीबोर्ड फंक्शन लाइक अ माउस. तो आप क्लिक करोगे ईज ऑफ एक्सेस कैटेगरी पे फ्रॉम द कंट्रोल पैनल विंडो. देन सेलेक्ट करना है आपको चेंज हाउ योर माउस वर्क्स ऑप्शन. क्लिक एंड एक्टिवेट द चेकबॉक्स. टर्न ऑन माउस कीज. या फिर आप सेलेक्ट कर सकते हो सेट अप माउस कीज ऑप्शन को विद द नम लॉक इन ऑफ मोड एंड आप यूज कर सकते हो न्यूमेरिक कीपैड फॉर माउस फंक्शंस. फिर आप क्लिक करोगे अप्लाई बटन पे एंड देन क्लिक ऑन ओके. यूजिंग ऑन स्क्रीन कीबोर्ड. तो ये जो कीबोर्ड है, अगर कीबोर्ड ने वर्क करना बंद कर दिया बट द माउस इज वर्किंग, so Windows 10 has an on-screen keyboard which can be operated with the mouse. तो आपको इसके लिए स्टार्ट करना है अपना एप्लीकेशन where you wish to use the keyboard. Then select the start all programs, accessories and ease of access options. Then आप select करोगे on screen keyboard option को and एक digital keyboard display हो जाएगा आपकी screen पे as a window. Then our step 4 is click on the desired keys and the effect would be displayed in the application. नेक्स्ट इज अवॉइडिंग प्रेसिंग टू कीज टुगेदर. दैट मीन्स हमें अपने कीबोर्ड पे दो कीज को एक साथ में प्रेस नहीं करना. एंड ऑफन प्रेसिंग टू कीज टुगेदर. समटाइम्स वी हैव टू प्रेस द कीज टुगेदर, जैसे कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस डेल. तो ये एक प्रॉब्लम है एंड विंडोज ऑफर अ सॉल्यूशन इन द फॉर्म ऑफ स्टिकी कीज, जहाँ पे हम प्रेस कर सकते हैं कॉम्बिनेशन कीज वन बाय वन इंस्टेड ऑफ होल्डिंग द कीज टुगेदर. Now follow these steps to activate this feature. आपको क्लिक करना है स्टार्ट बटन पे. Then go to control panel, ease of access center, select the change how your desktop works option. Then activate sticky keys by clicking on the checkbox and click on apply button and then click on OK. Now try out different key combinations. For example, अगर caps lock key off mode पे है तो आप try करोगे to write capital letters by pressing shift key and the letter key one by one. Instead of normal pressing, hold down the shift key and pressing the letter or symbol. Let's revise the chapter. Windows is an operating system that acts as an interface between the user and the hardware. Windows Explorer एक main tool है that you use to interact with Windows 10. You need to use the Windows Explorer to view, explore या फिर organize libraries, files and folders. Library एक kind of folder है in Windows 10 जो allow करता है हमें to organize files in one place so that they are easy to search and access. Control panel एक system folder है using which हम changes create कर सकते हैं in the appearance and current settings of the window. You can also install any software in your computer. Windows के पास एक off screen keyboard होता है which can be opened with a mouse. Let's do the exercise. First is tick the correct option. Windows has an on screen dash which can be operated with the mouse keyboard. Dash option displays extra large size icons of the files and folders. Extra large icons. Dash displays the content as a list of files or folders, names preceded by small icons. List view. Windows dash is used to view, explore or organize libraries, files and folders. So Windows Explorer. Let's do true false. Medium icon option displays medium size icons of folders and files. True. Explorer Windows is divided into two panes. True. Date and time once stored cannot be changed. False. Windows 10 provides two default libraries. False. Sleep is a power saving state wherein a computer does not turn off completely. True. Let's do fill in the blanks. Dash has an on-screen keyboard which can be operated with the mouse. So the answer here is Windows. Now Windows 10 is an operating system launched by Microsoft. Control panel is a system used to make changes in the dash and current settings of the Windows system. Dash is the main tool that you use to interact with Windows 10, Windows Explorer. So students, this was your complete chapter. I hope it is clear to you. Do revise it once again and also learn your exercise. I will see you in your next video with next chapter. Till then, take care. Bye-bye.